अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मिस्कीन लर्निंग। ये है एसएससी क्वेश्चन बैंक का अनसीन पैसेज नंबर 4। लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पैसेज का टॉपिक है ट्रैवलिंग टू द वेस्ट, यानी मगरिबी मुल्कों में जाना। आमतौर पर हम जब मगरिबी मुल्कों की बात करते हैं तो वो यूके या यूएस के बारे में होती है, लेकिन यहाँ बताया गया है कि चाइना से इंडिया का एक छोटा सा सफ़र एक ट्रैवलर ने किया था और इस सफ़र को वो कहते हैं ट्रैवलिंग टू द वेस्ट, क्योंकि इंडिया चाइना के वेस्ट में आता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सॉल्यूशंस। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड डू द एक्टिविटीज। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस यूजिंग द इंफॉर्मेशन गिवन इन द पैसेज। वी नेचुरली स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अ जर्नी। पैसेज में देखिए, व्हेन वी रीड द वर्ड्स जर्नी टू द वेस्ट, we naturally start thinking about a journey to western countries. इसका जवाब क्या है? We naturally start thinking about a journey to the west. For dash we are the west. For countries to our east we are the west. It was made famous by 7th century traveler Yuan Zhuang. It was like a pilgrimage to him. Describe the journey to India in those days. पैसेज में ये देखिए, ये जो अंडरलाइन किए गए लाइंस हैं वहाँ पर हमें जवाब मिल जाएगा। अब इन पॉइंट्स को हमें पॉइंट फॉर्म में लिखना है। जो यहाँ पर सेंटेंस फॉर्म में है उसे पॉइंट फॉर्म में लिखना है। ट्रैवलिंग thousands of miles on foot, नंबर 1 पॉइंट। क्रॉसिंग द डेजर्ट्स, क्रॉसिंग snow-clad mountains, क्रॉसिंग strange unfamiliar regions, using roads where bandits and robbers roamed. Find out and write 4 adjectives from the passage. Adjectives यानी जो describing words होते हैं। तो देखते हैं हमारे पैसेज में कुछ words हैं famous, easy, snow-clad, strange और unfamiliar. Do as directed. First, we naturally start thinking about a journey to Western countries like England and America. Use as well as. Answer. We naturally start thinking about a journey to Western countries like England as well as America. तो and की place में हमने as well as लिखा है. It was like a pilgrimage to him. Frame a WH type of question. Underlined word है a pilgrimage. तो सवाल क्या होगा? What was it like to him? What kind of places do you like to travel? Why? I like to travel to historical places. Historical places have a lot of significance in our lives. It gives me the opportunity to learn about the rich history and culture of our country and to explore different regions of our great nation. They provide a lot of information about our past generations and their lives. There are many beautiful and interesting historical places that can be enjoyed by any age group. I especially love the delicate architectural designs of various monuments. My favorite historical places are the Ajanta and Ellora caves in Aurangabad. Summary writing. Title: Yuan Zhuang's Journey to the West. Summary. The passage talks about the concept of journey to the West. Generally, West means countries like England and America. However, it is a relative term. For example, the journey taken by the 7th century traveler Yuan Zhuang from China to India is called his journey to the West. In the olden days, traveling from China to India was full of difficulties due to harsh geographical conditions and threats from bandits. But Yuan Zhuang wanted to fulfill his dream of taking the Buddhist scriptures from India to China. Thank you for watching this video. Please like, share and give us your feedback. All the best for your exams.